सृष्टि सिंह, चलिए इज दिस विजिबल बेटा? यस सर। सर Okay. प्रोबेबिलिटी में डाउट्स है हाँ बेटा बोल लो। जो आपने असाइनमेंट की थी सर उसमें। असाइनमेंट में बेटा Yes, रुक सर जाएगा। दमन आहूजा प्रेजेंट। दमन एक टॉपिक और सर रह आरव गया, ग्रेवाल प्रेजेंट। आरव ग्रेवाल, क्योंकि इतने में ना और बच्चे भी ट्राई कर लेंगे तो विल डिस्कस। आरव ग्रेवाल एंड दमन प्रेजेंट। दमन आप कल भी एब्सेंट थे ना बेटा? सिद्धार्थ आपने पूछा ना बेटा असाइनमेंट के डाउट? yes. थोड़ा सा रुक जाएगा, टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं अभी, थोड़ा सा बस ये कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, देन आफ्टर दैट आई डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस विद यू, ठीक है ना? वर्कशीट के एक एक क्वेश्चन कहोगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में। आपका मैंने वो क्वेश्चन भी नहीं भेजा ना, आपने बोला था मुझे मदर का क्वेश्चन ना, राइट? सर वो हो गया, कर लिया मैंने। हो गया, चलो यस सर। रुको थोड़ा सा, मैं आपको बता दूंगा बेटा, है ना? जाओ। ओके, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 13 डिफरेंशिएशन। अगर आप लोगों ने कुछ ट्राई किया हो तो बताओ बेटा। एनीवन ट्राइड प्रॉब्लम्स बेटा? आई हैव गिवन ऑल द हाँ जी बेटा बोलिए। The fifth question of 13.2. Fifth question of 13.2, right? Exercise 13.2, question number 5. Anyone joined late beta, please inform. अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो बता दो। Okay, now I'm starting. Question number 5 is beta, for the function this, so we have function fx is equal to x by 100 by 100 plus x by 99 by 99 plus dot 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 up to x square by 2 plus x plus 1. This is the question, and prove that we have to prove f dash 1 is equal to 100 times f dash 0. This we have to prove it. For finding dash, first we need to find out the differentiation of this given function beta, right? So now which formula we have to apply? See, I have given you a one rule which is known as scalar multiplication, that says that kfx, if we have to differentiate kfx, its differentiation is k as it is derivative of this function only. And the another formula is required, d by dx of x raised to the power n. This is known as power rule. Power rule means variable raised to the power constant. So variable raised to the power constant. The formula we have to apply n x n minus 1. Right? So like if we have to differentiate x raised to the power 100 by 100. First meaning of this is 1 by 100 into x raised to the power 100. Now this is your fx and this is your k. We need to keep k as it is and we need to differentiate only the function. This is your function. Right beta? So if we are differentiating this formula k is constant. Which one beta? K is constant beta. K is constant. Yes, somebody is saying. हाँ जी बेटा, किसकी आवाज थी बीच में, कुछ बोल रहा था? K is constant, right? और ये constant कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 1 by 2 1 by 3 2 3 4 A B C कुछ भी हो सकता है बेटा K आपका, right बेटा? So now we have to differentiate this. So this is K
we have to keep this as it is, and in this we have to apply this formula, which is 100 x raised to the power 99. So कुछ चीजें अपने माइंड में रखो. When we have to differentiate this, directly write 100x 99, divide में constant है, keep this as it is. Next will be 99x raised to the power 98 and divide by 98. This way. So now I am differentiating actual question f dash x, derivative of this 100 x 99 divided by 100 as it is, plus 99 x 99 98 sorry divided by 99. इससे अगला कौन सा होगा बेटा? Excuse me, sir. 98. हाँ जी बेटा बोलिए. Sir, please mark me present, Iman. Sorry, sir. Actually, my mic is not working, so that's why I was not able to speak. Okay. Next term will be what beta? After x raised to the power 99, next term will be x raised to the power 98 upon 98. According to this logic beta, right? The power is decreasing and the constant is also decreasing by 1, right? So next will be 98 x raised to the power 97 divided by 98 and so on. So come to this one. Derivative of x square is 2x divided by 2. Derivative of x is 1 and plus derivative of 1 which is constant is 0. Simplify this now. This cancel. 99 99 98 98 2 2. So what is left? It is only 99 x raised to the power 98 7 to x plus 1. So how many terms we have this? $99. How many terms this? Number of terms कितनी है बेटा बताओ? So 99. 99. 100. प्लस 1 तो है तो 100 नहीं होगी. हाँ 100 होगा. So Sir, there are 101 terms now. So you are muted. Sir, you are You are muted. muted. Sorry. देखो बेटा, in this initially we have x raised to the power 0 to x raised to the power 100. So like 0 to 10 we have 11 term beta. If we are writing 0 to 9, this is 10 term. So the same way initially in the question we have x raised to the power 0 to x raised to the power 100. It means in this case 101 term we have. But after differentiation it is x raised to the power 0 to 99. So we have 100 terms. Clear? Why I'm asking? This is the to prove is required f dash 0 and f dash 1. So first we find out f dash 0. So 0 raised to the power 99. Ye bhi 0. Then this one also 0. Up to 0 plus 1. So value of f dash 0 is equal to 1 beta. Value of f dash 0 is 1. This is the value of f dash 0. Is this clear beta bolo? Is this clear beta? Yes, sir. Sir, Right? can you explain Now- this question again? देखो question is this one beta, x raised to power 100 by 100, x raised to power 99 by 99, then x square by 2 plus x plus 1. We have to prove this one, f dash 1 equal to 100 times f dash 0. So for finding f dash 1 we required f dash x first, right? For same beta f dash 0 we required first f dash x. So first step is to differentiate this line beta. So derivative of this is this thing, f dash x equal to 100 x 99, x 100 का derivative divided by 100 because this is a constant
and using this rule, scalar multiple rule, constant we keep as it is. We have to differentiate only the function part, and function part in this Yes. case is x raised to the power 100. So this is cancelled. After simplification, we are left with x raised to the power 99, x raised to the power 98, 97 and up to 1, because derivative of 1 is 0 and derivative of x is 1. Okay, so ये किया. After that, in derivative we are putting x equal to 0. So after putting up this value 0, value of f dash s equal to f dash 0 is 1. So this is the one part, beta. Now we required f dash 1. So we put x is equal to 1 in this step, beta. In this step we have to put x equal to 1. So solving this, beta, taking this, now finding f dash 1. So putting here, beta, 1 raised to the power 99, 1 raised to the power 98 and so on up to 1 plus 1. So all values are 1. So how many terms are this? This is 100 terms. That's why I've asked. These are 100 terms, beta. X raised to the power 0 to x raised to the power 99 is 100 terms. So if we add 1 to 100 times, the value will be 100. Now RHS, which is to prove, beta, we have to prove this one. We are taking RHS. So RHS is 100 times f dash 0, which is 100 into value of f dash 0 is 1, which is equal to 100, and this 100 is the value of f dash 1. So RHS to LHS आगे, or we can write LHS to RHS. So since LHS equal to RHS, hence proved. Clear, beta? बोलो. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Any Sir. other question, बेटा? किसका डाउट था? ये किसका डाउट था बेटा? हो गया क्लियर? नहीं हुआ उसको? Sir, it's clear, sir. आकांक्षा का डाउट था. ठीक है. ओके. Yes. Any other question? Otherwise, I'll take a question, बेटा. जो important questions हैं. Any other query, बेटा? If you have tried any more question, you can ask, बेटा. सर हाँ जी. सर वहाँ पे 100 into 1 is equal to 100, उसके बाद क्या लिखा है? F dash 1 बेटा. F dash 1. उसके नीचे उसके नीचे लिखा है LHS आ गया. RHS से LHS. ओके. थोड़ी रनिंग हैंडराइटिंग. ठीक है. Should I change pen, beta? Excuse me, Is sir. this red ink is visible to all of you, beta? Or should I change yes pen? sir. Yes, sir. It's visible. Okay, okay. हाँ जी बेटा, आपका डाउट था. हिमांशु कुछ बोल रहे थे, बोलो. Sir, I have a doubt in question number 6. Please explain it. Question number 6, beta. Same question, beta. This is question number 6. Find the derivative of this for some fixed real number Sir, a. same method से करना है. Same. Apply this power rule only. Okay, sir. Right? This only. और any other question? बेटा देख के भी जो weird लग रहा है वो पूछो मुझसे एक बार. जो क्वेश्चन देखने में weird सा लग रहा है ना, आप प्लीज पूछो मुझसे. सर क्या इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें f of -1 पूछ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते बेटा? निकालो. सर उसकी ट्रिक बता दो फिर. ट्रिक तो एज सच कुछ नहीं. आप देखते हैं f डैश -1. -1 रेज़ टू पावर 99 इज माइनस, देन 98 होगा तो प्लस हो गया, देन माइनस, देन प्लस. तो आप चेक कर लो. वी हैव 100 टर्म्स, राइट? तो 100 टर्म में 50 में माइनस आएगा, 50 प्लस आएगा, तो आई थिंक 0 होगा. यही लॉजिक लगा सकते हो बेटा. ठीक है, बिकॉज इवन Okay, नंबर है sir. बेटा. 100 टर्म्स आ रही है, 50% प्लस होगा, 50% माइनस होगा, कैंसिल्ड. इफ इट इज 99 टर्म्स और इट इज 100 टर्म्स, तो आपको बस ये देखना है कि माइनस वाला बच रहा है या प्लस वाला बच रहा है. ये चेक करना है सब. अच्छी चीज पूछी है आपने. ये मुझे भी दे दिया एक क्वेश्चन आपने बनाने के लिए. Seventh question. गुड. क्या बेटा? Question 7, part 2. क्वेश्चन 7 पार्ट 2, राइट. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2. Sir, हाँ जी बेटा, बोलिए. sir like जो क्वेश्चन नंबर 10 है सर, उसमें हमें डेरिवेटिव ऑफ cos x निकालना है, बट सर हम उसको पता तो है कि माइनस sin x होता है, बट सर इसको हम करेंगे कैसे? ना, उससे एक बार वो भी करा दो. फर्स्ट प्रिंसिपल बेटा,
अगर आपको सीखना है तो मैं सिलेबस खत्म होने के बाद बताऊंगा, ठीक नो है? सर उस वाले Otherwise- फॉर्मूले से nx n minus 1 हाँ तो वो भी nx n minus 1 से बेटा वो भी बताऊंगा, लेकिन वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि cosx की एक सीरीज होती है, वो आपको नहीं पता, क्योंकि वो भी हमने नहीं पढ़ा। तो पहले Okay, cosx sir. की एक सीरीज आपको बताऊंगा पहले, ठीक है? cosx खाली cosx नहीं है, cosx इज रिप्रेजेंटिंग अ सीरीज, एक सीक्वेंस और एक सीरीज को रिप्रेजेंट करता है cosx, ठीक है बेटा? वो डिस्कस करूंगा आपके संग, तब आपको क्लियर होगा। Okay. क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। First open this bracket beta, open this square formula, which is a square x4 plus twice abx square plus b square. We have just opened a plus b whole square formula, right? Now differentiate this. F dash x is equal to, this is your k, we have to differentiate only function. So keep this a square as it is, derivative of x raised to the power 4 is 4x cube plus, now in this case 2ab is your k, scalar value, and we have to differentiate only x square. So it is 2ab as it is, derivative of x square is 2x. Now b square, this is independent of any variable, constant term है बेटा ये, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया. Now write in simplest form, which is 4a square x cube plus 2 to the 4, 4abx. This is my answer. Or you can further simplify, take 4a common, and it is ax cube plus bx. We can take x also common, so square, and this is only this. Means 4ax, ax square plus b. This is my final answer after simplification. Some student keep write only this answer. Always in calculus, remember one thing beta, you have to write last simplified answer. अगर आपको लगता है कि we have some scope of simplification at this step beta, you take that common and simplify and write the final answer. अगर मेरे पास आंसर की में ये आंसर होगा and you have written this answer, I'll deduct half mark, right? But in marking scheme, if answer is this and you have written this, कम से कम डिडक्शन नहीं होगा आपका बेटा, ठीक है? तो मिनिमम नहीं है, आपने मैक्सिमम दिया है, ये ध्यान रखिए आप. क्लियर है बेटा? किसका डाउट था ये? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बेटा, प्लीज रिप्लाई बेटा. इज दिस क्लियर? चलिए, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? एनी अदर क्वेरी? No, sir. चलिए, then I'm taking another question beta, which is in question number 9, or we can take question number 8 also beta. First I'm taking question number 8. Find the derivative of this. So you represent function fx equal to x raised to the power n, a raised to the power n upon x minus a. Now identify the function first and tell me which rule I have to apply. Which rule I have to apply? This function Gx na. yes, px upon qx. This is in px p by q form. Rational expression. This is a rational expression, and in this we have to apply quotient rule. Quotient rule. And what is that quotient rule? First you write that rule, and rule says that square of denominator, write square of denominator, and then denominator as it is, derivative of numerator, and derivative is represented by dash, minus, now numerator as it is, and derivative of denominator. Or you can write the same thing like this way, x minus a, then dot d by dx of x raised to the power n, a raised to the power n, minus x raised to the power n, a raised to the power n as it is, derivative of this, write d by dx of x minus a, whole divided by x minus a whole square, right? So we have just applied the rule, not differentiated. This is the application of the rule only. We have just applied the rule, right? Now we differentiate. So this is as it is, so write as it is, x minus a,
dot derivative of x raised to the power n, which is And next to the power n x minus n 1. minus, right? And what is the derivative of a raised to the power n, beta? 0. 0. Very good. So we write only this thing, minus x raised to the power n minus a raised to the power n. Then derivative of x, beta, 1. 1, and derivative of a, 0. 0, right? Because a is constant, or constant raised to the power constant is also constant. So here an is constant, here a is constant, right? Divide by x minus a whole square. Now multiply this. It is multiply nxn minus 1 with x. So this is n x become n. Then multiplication of this is minus n a x raised to the power n minus 1. Then minus x raised to the power n, and minus minus plus a raised to the power n upon x minus a whole square. Now simplify like terms. This is, so this implies n minus 1 x raised to the power n, and बस और कुछ नहीं है, minus n a x raised to the power n minus 1 and plus a n. So this is the last simplified according to me. This is my answer, beta. सर Right, beta? हाँ जी बेटा बोलिए. सर जो डिनोमिनेटर में x माइनस ए होल स्क्वायर था सर, उसको हमेशा हमें ऐसे ही रखना है, फिर उसको भी स्टार्टिंग में हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं s माइनस ए से अगर कैंसिल आउट करके. हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर मैं इसको ओपन करने से मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है, सो ओपन दिस ब्रैकेट बेटा, अदरवाइज डोंट ओपन, और वेयर्ड हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन के देखो, जब आप यहाँ लास्ट सिंप्लीफाइड में पहुंच जाओ, नाउ देन रियलाइज वेदर इफ एक्स ए माइनस इज रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई और नॉट. अकॉर्डिंगली चेक करो बेटा कि कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है. इस लेवल पे आके आपको इतना आइडिया हो ही जाएगा कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो कुछ कैंसिल हो रहा है, या यहाँ से कॉमन आ रहा तो एक पावर कैंसिल हो रही है. स्टार्टिंग में भी कर सकते थे ना, x माइनस ए से x माइनस ए होल स्क्वायर से. आप नहीं, अगर कैसे करोगे बेटा, अगर आप इसमें x माइनस इसको सेपरेट करोगे, फिर दिस डिवाइड बाय दिस, यानी यहाँ पे दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, तो यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको सिंप्लीफाई करने में एलसीएम लेना पड़ेगा. तो आप ऐसा स्टेप ही क्यों ले रहे हो? ठीक है. यस स्टेटमेंट इज व्हाट इन कैलकुलस, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, योर आंसर शुड बी लास्ट सिंप्लीफाइड. आपके अकॉर्डिंग मुझे और कोई स्कोप नजर नहीं आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन का. मेरे कहने का मतलब ये. ठीक है, इज दिस क्लियर बेटा? यस. चलिए, नेक्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन 9 नाउ. क्वेश्चन नंबर 9 में सपोज मैं लेता हूं सेकंड पार्ट. इन क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट इज, फर्स्ट वी राइट फंक्शन and 5x cube plus 3x minus 1 into x minus 1. See, we have two factors in multiplication, so we have two options here. Either we can apply product rule, or we can first simplify this expression by multiplying these brackets better. So we have two options. First option, I am taking normal method which we have done in, and the normal product formula beta. Multiply 5x cube by these two terms, so it is 5x4 minus 5x cube. Now 3x multiply with these two terms, this will give 3x square minus 3x, then minus x plus 1. Now in this case, you will get the differentiation in next step beta. What is the derivative of 5x4 beta? Please. 20x cube. 20x cube. Yes, next. 5x cube derivative. 15x 20x square. square. 15x square. Next beta. बोलते जाओ. 6x square minus 3 minus. ठीक है? 3x का minus 3x का minus 3 and minus x का minus 1. So in next step we'll write this 20x cube minus 15x square and 6 square minus 4. So easiest method in this case is this one only, right? Another method is using the product rule. So whichever you find easy for you, you can solve.
third I'm taking in question number 3, it is fx is equal to x raised to the power minus 3 into 5 plus 3x. So it is better to multiply this. So it is 5x minus 3 and plus 3 into this is 3x raised to the power minus 2. Check whether this product is correct or not, beta. Is this correct, beta? Yes, sir. Right. So we can write this way, 3 by x square, or you can solve from this step directly. So we know that the power rule of second type, second power rule, beta. So we can apply that also. It is minus 15 by x4 and it is minus 6 by x cube. चेक करो बेटा, Cube. मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, 1 by x raised to the power n, it is minus n upon x raised to the power n plus 1. This formula I have used. Otherwise, from this step, you can write minus 15x minus 4 minus 6x raised to the power minus 3, and in the next step you have to write minus 15 by x4 minus 6 by x4 x3 सॉरी. आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे, दोनों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो. राइट बेटा, चलो एक और लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट. It is x raised to the power minus, first we write fx is equal to x raised to the power minus 4 into 3 minus x raised to the power 4 times x raised to the power minus 5. After simplification, this is 3x raised to the power minus 4 minus, इसको multiply करते हैं, this is 4x raised to the power minus 9. Right? So whichever method you can write, this is minus 12x raised to the power minus 5 and plus 36 x raised to the power minus 10. Finally, you have to write this way, plus 36 by x raised to the power 10. ये मेरा फाइनल आंसर है. ठीक है बेटा, बोलो. Is this clear, beta? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now in sixth part, which rule we have to apply? In sixth part, So quotient rule. quotient rule. So sixth part I'm taking, it is fx 2 upon x plus 1 and minus x square upon, सर ये बस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिखाना. ये लो बेटा देखो, कोई गलती, 3x से No, minus sir, done. square, ठीक है. देखो इसमें दोनों क्वेश्चनों में क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है. सो f डैश x इज इक्वल टू, इट इज, फर्स्ट में अप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं पहले. सो राइट x प्लस 1 होल स्क्वायर. सो राइट x प्लस 1 into derivative of 2 dash minus 2 as it is, derivative of x plus 1 dash. Next is minus sign, minus in bracket, this is the first part. Now in second bracket we have to write 3x minus 1 whole square, 3x minus 1 as it is, and derivative of x square dash minus x square as it is, derivative of 3x minus 1, ये dash लिख. Right, apply now. X plus 1, and what is the derivative of 2? It is 0 0. minus 2. Derivative of x plus 1 beta. Derivative of x plus 1. 1. 1 divided by x plus 1 whole square. This is the simplification of first part. Minus, now second part beta. 3x minus 1 whole square. 3x minus 1. Derivative of x square is 2x. 2x, sir. Right. Now x square. Derivative of 3x minus 1 is 3. 3. right. Now simplification. It is minus 2 upon x plus 1 whole square minus, now simplification of this bracket, it is 2 3 just 6, x square minus 2x minus 3x square upon 3x minus 1 whole square. Now simplify this. ये simplify हो रहा है बेटा. Minus 2 upon
x plus 1 whole square and 3x square minus 3x. तो ये हो गया आपके पास 3x square minus 2x upon 3x minus 1 whole square. This is my answer बेटा. और कुछ लगता है सिंप्लीफाई करना तो वो देख लो आप, नहीं तो मेरे हिसाब से ये फाइनल आंसर. राइट बेटा? एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन? No, sir. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, they are saying find the derivative cos x from first principle. So first principle is not in syllabus, so derivative cos x is sin x. If question, वैसे तो ये आएगा नहीं. Question number 10, fx equal to cos x, this implies f dash x equal to minus sin x. Minus x, sir. This is the answer only. Right? Now in question number 11, they are asking find the derivative of the following function. So normally they are asking derivative. First part I am taking, this is sin x into cos x. So two functions are in multiplication form. Two functions are in multiplication form. So how to apply this one? F dash x, derivative of first, dash लगा दिया, and keep cos second as it is. Plus, now first as it is, and derivative of second, dash. Now sin x derivative is cos x. So cos into cos, this becomes cos square x. Cos square x, sir. Now derivative cos x is minus sin x. Minus sin x into sin is minus sin square. Minus sin square x, sir. Now this is not the answer. What is this formula beta? Anyone? So -1. No. Cos square x minus sin square is the formula of what? Anyone Cos- beta? Who can- Cos 2x, sir. Very good. Cos 2x. Yes, sir, cos 2x. Right? This is the answer you have to write. This is the best example in which you can get half mark next beta. अगर आपने यहीं छोड़ दिया, you will not get full marks beta. ये वो example हो गया एक तरीके से. ठीक है? So आपके इस question number 11 में direct है बेटा. Question number second part is secant x. Derivative secant x is secant x tan x. So in question number 11, you have to write derivative directly beta. In question number, like I'm taking 11th, suppose fifth part I'm taking, this is fx is equal to 3 cot x plus 5 cosecant x. This is my question beta. Now derivative is f dash x. 3 k fx है बेटा ये देखो. So we keep 3 as it is. Derivative cot is minus cosecant square. My answer will be 3 cosecant square x. Yes. Anyone who knows the formula of cosecant x? Derivative of cosecant x beta. हाँ जी बेटा. Anyone? Sir, minus cos x. Yes. So it is minus 5 cosecant x cot x. Formula learn करो बेटा अभी. And you can take minus common, cosecant x common, and this implies 3 cosecant x plus 5 cot x. I can write this as final answer. Right? So this way you have to simplify question number 11. Right beta? So concept we have done, and we can try questions of miscellaneous also beta. आप मुझे बस देख के बताइए in miscellaneous exercise. First principle भूल जाएंगे बेटा. Right? Will not attempt any question of first principle. Wherever we this written first principle, we have to differentiate directly beta. Right beta? So like in first question of miscellaneous exercise, first part is minus x. What is the derivative of minus x beta? Derivative of minus x, please. -1. Minus 1. So it will be minus 1. Minus 1. 1. Answer is minus 1. What happened बेटा? अभी तो आप लोग सब जवाब दे रहे थे. Next लेते हैं बेटा. Like minus x raised to the power minus 1. चलिए. Simplify this one बेटा. So 1 by x square. First can we write for in simplest form beta? Can we write this like this way beta? Minus -1 by x square. 1 by x. upon
minus x raised to the power 1. Can we write this way, beta? Yes, sir. Right? Yes, sir. So it is basically minus 1 by x. So what is the derivative of this? Minus 1. No. Power rule second type. Power rule second type. So minus 1 by x square. Minus 1 by x square. Minus is already there, beta. This formula is Yes. giving negative sign. This formula is giving negative sign. So this minus and this minus become positive, and minus 1 by x square become 1 plus 1 by x square, beta. This is the answer. ठीक है? चलिए, in question number 3 आपके पास लिखा है px plus q into r by x plus s, right? r by s plus s, r by x plus s. बोलो बेटा, which rule we can apply here? Either direct multiplication or we can use product rule. So whichever you find product rule. convenient. So I think direct करना ज़्यादा better है. px by into r by x is only pr. Then px into s is psx. Now q के साथ करते हैं q r by x plus qs. See, pr and qs both are constant term because these two are independent of x. Independent of x means these terms are not even multiplied by any variable, not divided by any variable, right? So in next step, derivative of these two terms, this is 0 and this is also 0. 0. Now derivative of psx, in this case ps is constant k, or PS. derivative of x is what? 1. So this is 1. ps, Yes, sir. right? Now in this case qr as it is constant, what is the derivative of 1 by x? Using this, it is minus 1 by x square. Minus 1 by x square. Yes, the final answer is ps minus qr by x square. This is my answer, beta. ठीक है बेटा, बोलो. Is this clear? So now tell me which method you will apply in question number 4. By expanding the product or by product rule? Which rule we can apply? So as in product rule. As a Product product rule. rule, मतलब हमारे पास two options we have, right? So fx is equal to ax plus b into cx plus d whole square. तो मेरे पास दो तरीके हैं बेटा. First we can open this bracket and then multiply. So this is known as by expanding the product. And another method is using the product rule. This is your fx, this is your gx. ठीक है? तो ये आप ट्राई करोगे. Question number 5. Question number 5. Which rule we have to apply, beta? Quotient So rule. quotient rule. Right? Question number 6. Which rule we have to apply? First, we have to simplify the expression. And The then simplification. quotient rule. Yes. So first, the simplification part is this one, and now apply quotient rule, beta. QR. In 7th also we have to apply quotient rule. Whichever question is in this form, beta, px by qx, yani rational expression, there we have to apply quotient rule. Always remember this thing. So we have 5, 6, 7, 8, 9. These are direct quotient rule problem, beta. Till 5 to 9, all are quotient rule method. 10 direct है बेटा, 11th is again direct, 12th is, आप 12th को यहाँ पे छोड़ सकते हो बेटा बेशक. Reason? Because we have not done the power n, ax plus b raised to the power n, and power n means we have to read this chapter beta, binomial theorem, which is chapter 8, and this सर is इसमें not. हम ax plus b को पूरे को x मान के भी सॉल्व कर सकते थे ना. बेटा वो जो आप जो मेथड कह रहे हो ना बेटा, आपने सीख लिया वो बात अलग है. अदरवाइज दैट मेथड इज इन क्लास 12. ठीक है, जब वो चीज आएगी तभी करें तो ज्यादा बेहतर. और अभी हमारे पास टाइम नहीं होगा. 13 भी सर क्वेश्चन नंबर 13 पे बारे में थोड़ा मुझे बिल्कुल रिलेटेड है. बिल्कुल बिल्कुल. यू कैन एलिमिनेट 12, 13, राइट. सर बट ये तो इजीली हो जाएंगे दोनों. नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप कैसे लोगे आप बताओ.
पावर n को ओपन किए बगैर कैसे सॉल्व करोगे बताओ आप। चलो आप में से कौन बताएगा ax प्लस बी की पावर n का डेरिवेटिव, बोलो भाई क्या है। सर सर b 1 टू द मिनट निकाल रहा हूँ। a नहीं क्या करोगे आप इसमें बोलो। सर b टू द पावर 0 a n की हम पावर आई थिंक an n into a b की पावर n minus 1 n into ax यस सर प्लस करेक्ट। b की पावर n माइनस वन देन नो सर Into एन A. ही आएगा। into a। चलो बट यस सर। दिस रूल इज नोन एज व्हाट बेटा बोलो। Chain rule. And chain rule not in 11th class beta, so why I'm saying this is not in चेन class रूल 12। 11th में नहीं है। नहीं है बेटा, कहाँ है बताओ। जो मैंने बताया है, देखो आपको मैंने सिलेबस का एक चार्ट भेजा है जो सेकंड टर्म सिलेबस है, उसमें देखो क्या क्या है। क्वोशिएंट रूल, राइट, प्रोडक्ट रूल, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स। सो व्हाटएवर इन क्लास 11 बेटा आई हैव गिवन यू दैट। अगर उससे ज्यादा देता हूं तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना। अब आप में से 2 बच्चों को तो आ गया वो समझ में, मैं करा भी देता, और मान लिया मैंने क्वेश्चन दे दिया होता तो कुछ जो एनालाइज करते हैं उसमें से ये कहते तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता बेटा। ठीक है कि भाई मैंने एग्जाम में दे दिया, अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दूं, बायनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी नहीं है, अगर बायनोमियल पढ़ी होती है आपने तो चेन रूल की जरूरत ही नहीं थी मुझे। यू जस्ट नीड टू एक्सपेंड यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम एंड डिफरेंशिएट, यही करना था उसमें काम। इसको मैं अप्लाई करने के लिए कहता ही नहीं आपको, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12। दिस चेन रूल इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12, राइट बेटा। तो रिमेंबर दिस थिंग, 12 और 13 को यू कैन लीव बेटा, 16 पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। यू कैन डिलीट 19th ऑल्सो बेटा, आप 19 को भी हटा सकते हो, 19 को भी क्रॉस लगा दो आप, 30th को भी क्रॉस लगा दो आप, एंड रेस्ट ऑल यू हैव टू ट्राई बेटा। ठीक है, 17 अप्लाई क्वोशिएंट रूल, 18 अप्लाई क्वोशिएंट रूल, 20 क्वोशिएंट रूल, 21 क्वोशिएंट रूल, 22 प्रोडक्ट रूल और बाय एक्सपेंडिंग whichever method you can apply, 23rd is again product rule, 24 product rule, 25 product, 26 quotient rule, 27 is important and this is in quotient rule, 28 quotient rule, 29 product rule, like so these all questions are direct beta। तो आप क्वेश्चन को देख के ही खुद रिकॉग्नाइज कर सकते हो दीज आर प्रोडक्ट और क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये ट्राई करना डिफरेंशिएशन, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ प्लीज आस्क डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास। डिफरेंशिएशन का बेसिक है 12th का, और हम लोग 12th डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। ओके, और आप लोग ये ट्राई करोगे, मैंने आपको बता दिया 12, 13, 19, 30 यू कैन डिलीट फ्रॉम द सिलेबस दिस सेशन। बस हो गया हमारा टॉपिक ये बेटा। अब आपके ऊपर है, जो डाउट पूछोगे नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज विल स्टार्ट कोनिक सेक्शन बेटा। ठीक है ना बेटा, इतना काम करना आज की डेट में, और ट्राई करो क्वेश्चन पूछो बेटा। आपको खुद बता रहा हूं मैं, योर फर्स्ट राइट इज टू आस्क द क्वेश्चन। जो भी आपको पढ़ाया जाता है, फर्स्ट आस्क योर डाउट्स एंड देन अलाउज टू टीचर्स टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है ना, आप ये ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन पूछा करो, लेकिन ये तब पूछोगे जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और दिस इज द टॉपिक व्हिच रिक्वायर्ड मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रैक्टिस बेटा। डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम प्रैक्टिस बेटा, नॉट ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी, यू हैव टू रेफर द बुक आल्सो। ठीक है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एम.एल. अग्रवाल, whichever book you have, practice questions from there। ठीक है, 1 second होल्ड बेटा। चलिए देखिए, मुझे यहाँ पे 2 नाम नजर आ रहे हैं, आरव ग्रेवाल एंड संयम कक्कड़, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लास। तो बेटा आप लोगों ने ना मुझे इन्फॉर्म किया ना आप लोगों ने बताया है, तो लास्ट अटेंडेंस पे तो वैसे भी अटेंडेंस नहीं देता। ठीक है, सो प्लीज इन्फॉर्म एज एंड व्हेन यू ज्वाइन द क्लास।
इनिशियल 5-10 मिनट्स में कुछ नहीं कहता, उसके बाद तो प्रॉब्लम आती है बेटा। ओके ना, यू कैन लीव बेटा। थैंक यू। सर मैंने भी थोड़ी लेट ज्वाइन करी थी सर। हु इज दिस? लेनोय। लेनोय बेटा, तो फिर बताओगे नहीं तो मैं तो अटेंडेंस दे भी नहीं सकता। अब लास्ट में अटेंडेंस है आपकी, मैंने बीच में भी एक स्क्रीनशॉट लिया, उसमें भी नहीं हो आप ना, उसमें ना सृष्टि सिंह। तो आपने कब ज्वाइन किया है? आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो बेटा मैं कैसे दूं अटेंडेंस, बताइए। तो समय नेटवर्क 10-15 है बेटा, मिनट्स लेट ज्वाइन किया। हु इज दिस? आरव शर्मा तो शुरुआत में ही आ गए थे ना बेटा आप तो। और कौन था भाई जो लेट आए हैं? बेटा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है, मैं दे दे रहा हूँ इस पर। और कौन था? सृष्टि, चलिए, लेनोय, सृष्टि, आरव ग्रेवाल, संयम। चलिए, संयम तो आज बहुत लंबे गैप के बाद आया है। चलिए सर, ओके बेटा, यू मे लीव बेटा।